Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you all here in this webinar session being conducted by TNB Academy. It gives me immense pleasure to introduce our guest speaker for today's webinar, Mr. Sunil Kumar. In this webinar today, Mr. Sunil Kumar will discuss about Clause 5 of ISO 22000 Food Safety Management System, which talks about leadership. Our distinguished speaker, Mr. Sunil Kumar, has done his master's in microbiology. He is also a lead auditor in ISO 9001, FSC 22000, and ISO 22000 respectively. Mr. Sunil Kumar has audited several organizations for FSSC 22000 and ISO 22000 standards and has helped several others for their implementation. He has an industrial experience of around 10 plus years in field of food technology, food processing, and in auditing of food related industries. He has been imparting training to a number of organizations, entrepreneurs, and individuals on various topics related to ISO terminologies and their certification and implementation. This was just a brief introduction of our guest speaker today. And now, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Sunil Kumar. I may request Mr. Sunil Kumar now to please take over and start the webinar. Hi, good morning, all TNB Academy and Mr. Poof. Thanks to introduce me for the give the session on the clause number 5, that is leadership of standard ISO 22000-2018. So today we will cover the session on the clause number 5.0 leadership, that is the requirement of ISO 22000-2018, the food safety management system. So at the end of the session, you will be able to learn that how to implement the clause number 5, that is leadership, into the organization to implement the smooth of the standard ISO 22000-2018. So leadership in ISO 22000-2018. So the food safety, first we will discuss about the ISO 22000-2018. This is a basic condition like the requirement for the food industry. So the food safety management system, this is the requirement for any organization into the food chain and the documentation required. So what is actually ISO? So ISO is the International Organization for Standardization and is a worldwide federation of national standard bodies from the over 163 countries, and it is based in Geneva, that is Switzerland. So, and the mission of ISO is to promote the standardization and facilitate the international exchange of goods and services. So here we will start the clause number 5, leadership. So in the clause 5.0, leadership of ISO 22000-2018. So there are the three sub clauses of leadership, that is 5.1 leadership and commitment. Then second 5.2 is the policy. Then third 5.3 is the organization role, responsibility and authority. सो इस सेशन के अंदर हम लीडरशिप क्लॉज के अंदर जो तीन मेजर इनके सब क्लॉजेज हैं वो है लीडरशिप एंड कमिटमेंट, देन पॉलिसी, देन ऑर्गेनाइजेशन रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 5.1, दैट इज लीडरशिप एंड कमिटमेंट. So the top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the food safety management system by taking accountability, establish the food safety policy and objective of FSMS, then ensuring the integration of FSM into business processes, then ensuring the resource needed available. So the top management होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत मेजर प्ले रोल करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन को लेके. बिकॉज एक टॉप मैनेजमेंट है जो हर चीज का डिसीजन लेती है, लाइक कैसे आपकी लीडरशिप कैसी है, लाइक आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, आपकी जो बड़ी लीडरशिप टीम्स हैं, वो कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती है. बिकॉज इफ दे आर डेडिकेटेड टू दी, like they are respected to the FSMS and they are want to be implement their FSMS on the organization with their well manners, so they have to take their accountability. उनको अपनी accountability लेनी पड़ेगी. Then they have to be establish the food safety policy and objective. उनको अपनी फूड सेफ्टी पॉलिसी लाइक एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि हम जो फूड बना रहे हैं दैट इज सेफ फॉर दी फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन एंड वी आर मेकिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट्स. So they have to make this standard of the food safety policy and they also have to explain their objective कि हमारे objective क्या रहेंगे. For example, हम साल के अंदर 0 कस्टमर कंप्लेंट लाएंगे, लाइक हम इतनी ट्रेनिंग देंगे, हम गुड मैन्युफैक्चर ट्रेनिंग देंगे अपने एम्प्लॉयज को. So they have to establish these things into the organizations to implement the FSMS.
देन उनको जो FSMS की इंटीग्रेशन है इनटू द बिजनेस प्रोसेस, दे हैव टू बी नो, दे हैव टू बी इंश्योर कि हमारा कैसे FSMS है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, देन ही इज इंटीग्रेटेड टू देयर बिजनेस प्रोसेसेस। एंड दे आल्सो हैव टू इंश्योर द रिसोर्स नीडेड आर अवेलेबल, कि जो भी उनको रिसोर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल लाइक फॉर द क्वालिटी, फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द स्टोर, फॉर द वेयर हाउसेस, स्टोर, ट्रांसपोर्ट, ऑल रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर दे आर नीडेड। सो एक लीडरशिप को, टीम को, उनको इंश्योर करना है कि हमारी रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है, एंड दे नीडेड, दे हैव टू बी मीन comply with that. Then the 5.1 leadership equipment also including the communicating the importance of the effective food safety management system through the food safety policy. Like they also have to be mean effectively communicate their policy. Like जो भी उनकी policy है throughout the management system जो है, throughout the all of the stakeholders should be communicated. Then the ensuring that the FSMS is evaluated and maintained to achieve its intended result through the management review. तो रेगुलर जी जो मैनेजमेंट रिव्यू है वो कंडक्ट होनी चाहिए, ताकि हम श्योर हो सके जो भी FSMS हमने अपना बनाया है, जो FSMS हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसके थ्रू जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो हमारे जो इंटेंडेड रिजल्ट्स हैं वो हम कंप्लायंस कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि हमने जो भी FSMS के अंदर एवेल्युएट किया था, जो भी हमने इंटेंडेड रिजल्ट अचीव करने थे वो हम अचीव कर रहे हैं या कर लिए या करने चाह रहे हैं। सो हमें वो मैनेजमेंट रिव्यू के थ्रू हमें एवेल्युएट करने हैं। Then directing and supporting the person to contribute to the effectiveness of FSMS through trainings. तो जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वी शुड हैव टू बी इम्प्लीमेंट, जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है फॉर द GMP है, पर्सनल हाइजीन है, PRBs है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है, जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है थ्रू द FSMS वो हमें इम्प्लीमेंट करनी है। देन प्रमोटिंग कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, सो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट हमें यू हैव टू बी मीन प्रमोट दैट। सो हम कैसे वो कर सकते हैं थ्रू दी मैनेजमेंट रिव्यू, जो भी मैनेजमेंट रिव्यू की मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर सारे प्लांट के जो FSMS के जो वैल्यूएशंस इंटेंडेड रिजल्ट्स हैं वो हम मीन काउंट करते हैं या उनको वैल्यूएट करते हैं। सेकेंड इंटरनल ऑडिट करते हैं, इंटरनल ऑडिट से थ्रू हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट चाहिए, लाइक जब भी हम इंटरनल ऑडिट करेंगे उसमें कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स निकल के आएंगे, ऑब्जर्वेशन निकल के आएंगी, so that will be been beneficial for the organization to implement it. Then we have to supporting other relevant management roles, other relevant management role we have to support. Then the top management shall establish, implement, and maintain a food safety policy that is appropriate to the purpose and contents of the organization, and it's provide a framework for settling and review the objective of MSMS. And it also includes the commitment to satisfy the applicable food safety requirement, including statutory and regulatory requirement and mutually agreed customer requirement related to the food safety. So जो टॉप मैनेजमेंट है उनको जो भी उसकी फूड सेफ्टी पॉलिसी होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो स्टैब्लिश करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, मेंटेन करनी है। देन इट शुड बी एप्रोप्रिएट टू द पर्पस, कि आपकी पॉलिसी के क्या पर्पस है, देन आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो फूड सेफ्टी पॉलिसी का पर्पस एंड कंसर्न्स है वो डिस्प्ले होना चाहिए एंड कम्युनिकेटेड होना चाहिए, बिकॉज इट्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग एंड रिव्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ FSMS. Then establishing the food safety policy, so it should be address internal external communication, and it include a commitment to the continuous improvement of FSMS, and it address the need to ensure the competency which is related to the food safety. So address internal external communication, like जो भी internal communication external communication है that should be included. Internal include your organization and external include your suppliers, your legals like your FSSA, your external party like certification body, your testing laboratory body, and the pest control, your services body. So this is all including your external. And internal, your through on mails, communication, letters, and display. Then the next clause is like to 5.2.2 subclause of the food safety policy, and it should be available and maintained as a documented information. So एक उसका documented information होना चाहिए food safety policy का. It should be communicated, understand, and applied to level within the at all level within the organization. So हर ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे वो कम्युनिकेट होनी चाहिए, अंडरस्टूड होनी चाहिए एंड अप्लाइड होनी चाहिए,
मीन वो हर लेवल पे आपके हर एक डिपार्टमेंट के अंदर डिस्प्ले होनी चाहिए, हर एक वर्कर को, हर एक स्टाफ को। दे शुड अवेयर अबाउट देयर फूड सेफ्टी पॉलिसी, और उनको समझ में आनी चाहिए कि हमारी फूड सेफ्टी पॉलिसी है क्या। एंड इट शुड बी अवेलेबल टू द रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी एज appropriate. So the communication tools, it include your meeting, your requirement packs, your induction packs, supplier evaluations, supplier contract, notice board on site, website, internet sites, and annual staff appraisals. So communication tools जैसे मैंने बात करी, थ्रू द मीटिंग हो सकता है, थ्रू द नोटिस हो सकता है, थ्रू द डिस्प्ले बोर्ड हो सकता है, थ्रू द वेबसाइट, थ्रू द like the supplier evaluation, that is for the external communication. So this is how about the communication, the food safety policy, and the tools which are using for. Then 5.3 is the organization role, responsibility, and authority. So the top management shall ensure that the responsibility and authority for the relevant role are assigned, communicated, and understood within the organization. So top management इंश्योर करेगी कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी है जो कि रेलेवेंट रोल के अकॉर्डिंग जो असाइन की हुई है, कम्युनिकेटेड है एंड अंडरस्टूड है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, आपने किसी प्रोडक्शन मैनेजर को रोल दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है, उसकी अथॉरिटी डिफाइन है, क्या उसका रोल है, क्या अथॉरिटी है, दैट आर असाइंड एंड इट्स आल्सो कम्युनिकेटेड थ्रू देयर द ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर। The top management shall ensure that the responsibility and authority for relevant or assigned, communicated, and understood within the organization. So the top management shall assign the responsibility and authority for ensuring that the food safety management system conform to the requirement of document. सो द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर एम्प्लॉयज की डिफाइन होनी चाहिए, कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, जो कि क्लॉज की एक 5.3 क्लॉज की रिक्वायरमेंट की है कि ऑर्गेनाइजेशन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की क्लॉज के अंदर जो रिक्वायरमेंट डाली है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, और ये टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करता है थ्रू द एचआर कि हाँ हर एक एम्प्लॉय की उसकी जेडी डिफाइन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको असाइन की हुई है, कम्युनिकेटेड की हुई है एंड दे आर अंडरस्टूड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। So reporting on the performance of food safety management system to top management, तो जो भी आपकी FSMS फॉर एग्जांपल ये फूड सेफ्टी टीम लीडर इज देयर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है, उसकी अथॉरिटी डिफाइन है एंड ईयरली वो रिव्यू कर रहे हैं, ये 6 मंथली रिव्यू कर रहे हैं और उसके जो FSMS के आपका मैनुअल बनाया है या FSMS की इम्प्लीमेंटेशन है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, दैट इज रिपोर्टिंग टू द टॉप मैनेजमेंट so that they can evaluate and they can provide the resources that are required for the implementation. Then appointing the food safety team and the food safety team leader, then designating person with the defined responsibility and authority to initiate the recommended action. So जैसे हमने बात करी कि FSMS के लिए फॉर एग्जांपल your organization जो है the quality manager, then there is a food safety team leader. सो क्वालिटी मैनेजर भी फूड सेफ्टी टीम लीडर हो सकता है या अलग से आप ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप मैनेजमेंट है फूड सेफ्टी टीम लीडर को अपॉइंट कर सकती है। so they can do the implementation, their documentation of all the food safety management system manuals and their required document, so they can also review it and they can report to the performance of their FSMS manual. The managing and organizing the work of the food safety team and ensuring the relevant training and competency for the food safety team. Then they also ensure the food safety management system is established, implement, maintain and updated. Then report to the top and the effectiveness of food safety management system. So all persons shall have responsibility to report problem with the food safety management system to identified person. So जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं जिनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है, so all persons should have responsibility to report their problem with the food safety management system to identify person. So किसी को लगता है कि इस क्लॉज के अंदर फॉर एग्जांपल they want to be implement or they want to make some changes, they want to be improve the things, they want to be report some problem with respect to the food safety management system, तो वो identified person फॉर एग्जांपल the food safety team leader को एक्सप्लेन कर सकते हैं, so that can they can implement the things which are required, they want to be changed, so they can be improvement into the food safety management system. So these are the major the three sub clauses of leadership, that is the first is the food safety in the food safety policy, then implementation of food safety policy, then the role and responsibility of the organization.
So the top management is always has to be ensured the organization is committed to their food safety management system requirement, and they are implemented the things with the well manners and well face, and they all should be aware about their roles, responsibility, and authorities. So thanks to all of you. Thank you, Mr. Sunil Kumar, for such a detailed description about the clause 5 of ISO 22000. I hope that this particular webinar will be fruitful for us in understanding the requirements of clause 5 of food safety management system. This particular webinar will be posted on our YouTube channel as usual. So in case the viewers have any questions regarding the topic which is discussed in this webinar, they can please put their question in the comment section of the video, and we will be transferring those questions to our guest speaker for the respective answers. I thank Mr. Sunil Kumar from the bottom of my heart for giving his valuable time and efforts for the successful completion of this particular webinar. I hope to see you again soon with an exciting new topic. Thank you for your time and effort. Thank you so much. Thanks, Apuva. Thanks, TNB Academy.